Hi everyone, good evening. I welcome you all to RBI 247. Again, I'm taking the class today because Karnima ma'am is not here, and who knows, I might end up taking your classes of RBI 247 in the times to come. Do you guys know what this is and what this diagram or this map represents? आप एक बार मुझे बता दीजिए comment section में so that I can take it forward from here and explain to you what exactly we are going to discuss today. This diagram here or this map here represents the Silk Route. Can anyone tell me what exactly is Silk Route? We will be talking about the Silk Route, and India is ready to come out with its own modern version of Silk Route yet again. We are in talks with various countries around the world to introduce our own model of Silk Route. China recently came out with its own modern version of Silk Route called as BRI. कोई फुल फॉर्म बता सकता है सिल्क रूट की BRI की? Anyone can tell me the full form of BRI? यहाँ पे सिल्क रूट में आई फाउंड टू थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल बी शोइंग यू अनदर डायग्राम जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस हेयर इज इंडिया एंड दिस हेयर इज चाइना. ये यहाँ पर पूरा इंडिया है. यू कैन सी थार डेजर्ट हेयर, यू कैन सी दिल्ली हेयर. द रोड connecting Delhi to something in or someplace in Central Asia was called as the Great Royal Road. This was something unique and new that I found here. So I thought I'll share it with you. We will be talking about the modern Silk Route as well as China's own modern version of Silk Route very, very shortly. And this here is called or was called as the Imperial Highway. Now this was or this used to be the route connecting China to Europe, to Central Asia, to Middle East and to Europe as well. अब अगर हम एक और, if you look at another map which summarizes all this, this is India, this is the Royal Road which I just mentioned, this is the Imperial Highway which I just mentioned, and they connect somewhere here in the Middle East and then they all go all the way to Turkey and then to Europe. तो ये पूरा सिल्क रूट था. दिस यूज्ड टू बी a trade route that existed in ancient times, and countries around the world, especially India and China, are trying very hard to recreate a modern version of Silk Route because of the kind of trade that this route has had the potential of carrying out. So we will be talking about it very, very shortly. BRI, yes, Belt Road Initiative. Karnima ma'am is on some kind of a leave because she also has to प्रिपेयर फॉर हर ओन एग्जामिनेशन. हर कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव लेके आता है, हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं. सो ऑनरिंग दैट वी मेड श्योर, और धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ है. दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2 months नाउ. तो हमने डिसाइड किया एंड आई वांटेड टू टीच यू गाइज RBI 247. इट्स बीन क्वाइट अ वाइल सिंस आई टॉट RBI 247, सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट विद इट अगैन. एटलीस्ट अगले 6-7 महीने के लिए मैं आपको पढ़ाऊँ तो मेरी भी कुछ पढ़ाने की जो इच्छा है, जो नीड है, दैट शुड ऑल्सो बी फुलफिल्ड. अदरवाइज वाई एम आई वर्किंग, वाई एम आई डूइंग ऑल ऑफ दिस. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. वी विल नॉट बी स्टार्टिंग विद द सिल्क रूट बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द idea or the concept of jobless growth. Now, after 1991, we saw that India embarked on a new journey of economic reforms, but at the same time, we also saw after 2 decades of economic reforms, we witnessed that although we are growing, but we are not able to create enough jobs with that growth. We are growing, no problem with that. But the amount of jobs, the number of jobs that should have been created, India is not able to do that. Now, this is a brief analysis of that concept, that problem that India has been facing since 1991. So, I hope with this, the idea or the concept of jobless growth is clear. By the name itself, it becomes pretty clear. We are growing, but this growth is not transforming into jobs. It is still resulting in some kind of joblessness. We don't know why is it happening yet. We will try and figure it out.
So the article explores the issue of job creation in India and whether the country's impressive growth, we have shown impressive growth in the past 3 decades, has translated into sufficient new jobs, because jobs automatically result in improvement in living conditions or standards of living for the people. Apply it on yourself. If you're not able to figure out or find the right job for yourself where you are satisfied and at the same time you're getting enough money to sustain yourself, how will your living standards, both physical, mental and psychological or spiritual, will be fulfilled? It will not be fulfilled. So it is a very important idea that we need to understand as students preparing for RBI examination. ठीक है ना? Start करते हैं. Now this analysis that we are going to do is going to be limited because हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस RBI 247 कवर कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ रहे हैं. Our focus here is to cover whatever is mentioned or whatever is brought about in the newspapers. जो भी leading newspapers हैं उनमें जो भी updates आते हैं, using those I try and teach you the concepts behind those news briefly, but at the same time our focus remains on the news itself कि exactly हो क्या रहा है हमारे देश में, हमारी दुनिया में. ठीक है ना? Now this analysis is going to be based on State of Working India report, SWI report, which has been released recently in 2023 only by Azim Premji University. तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका स्पॉटलाइट वाला, फेज 1 वाला, कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली कब रिलीज हुई है, नंबर 1 क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन बाय विच इंस्टीट्यूशन इट हैज बीन रिलीज्ड. सो दिस एनालिसिस ऑफ आवर्स इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू द रिपोर्ट विच हैज कम आउट. इस रिपोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई एंड एनालाइज द कॉन्सेप्ट और द कंडीशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया. ठीक है? It says that there has been a shift in employment type and shift in employment sectors. अब ये शिफ्ट कैसे हुआ है थोड़ा सा इस ग्राफ से समझ आएगा और उसके बियॉन्ड हमें और सारी चीज़ें भी एनालाइज करनी है. नाउ यहाँ पे आपको यू माइट नॉट बी एबल टू सी दिस बिकॉज बहुत छोटा हो रहा है, बट आई कैन सी इट हेयर. आई विल टेल यू इट्स बेस्ड अपॉन डेटा बिटवीन 1983 एंड 2018. ये हमें ध्यान में रखना है. This data is based upon analysis between 1918, 83 and 2018. As per the data, अगर हम ये चार्ट को बस एनालाइज करें तो हम देखेंगे बाय सेक्टर मॉडर्न सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आया है. टू द राइट हैंड साइड इज एन इंप्रूवमेंट. पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रेडिशनल सर्विसेज. कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंप्रूवमेंट है. बट अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चर से पीपल हैव बीन मूविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर इन द लास्ट 10 plus 20 30 years or 3 decades. वी कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात भी हम करेंगे थोड़ी देर में. तो दिस वी कैन सी दैट देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज. ये हमें साफ साफ दिख रहा है. ओके अगर हम एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें, दिस हेयर शोज दैट देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल हु आर वर्किंग इन सैलरीड क्लास नाउ. जो प्रॉपर सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट है. बट देयर इज अ फॉल इन पीपल वर्किंग एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एज कैजुअल वर्कर्स. इन दोनों में फॉल है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. बट दिस हैज चेंज्ड आफ्टर कोविड बिकॉज दिस डेटा, और इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया, दिस डेटा इज फॉर प्री पैंडेमिक. आफ्टर 2019 कोविड पैंडेमिक यहाँ पर एक शिफ्ट दिखा है हमें. अ शिफ्ट हैज बीन विटनेस्ड हियर where the number of people in self-employment category have increased, the number of people in casual category have also increased, and at the same time people in salaried class have gone down. Because as economic growth falls, जैसे जैसे economic growth fall करती है, simultaneously the number of people who are involved as salaried workers in different organizations, that also starts reducing. Because economic growth is what? It's an increase in GDP. GDP is what? Production. तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज हो रही जितनी होनी चाहिए थी, if production was let's say 100 units yesterday and it should have been 110 units today in order to
हैव मोर पीपल वर्क एज सैलरीड वर्कर्स, इतना हो नहीं रहा है, 105 ही हो रहा है. द इंक्रीज इज लेस फ्रॉम 1110, it is from 100, it is 105. So number of people who wanted to be employed as salaried workers, they're not able to find enough employment. अब उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे? ईदर दिल स्टार्ट वर्किंग एज कैजुअल वर्कर्स और दिल क्रिएट देयर ओन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. वो अपने आप कुछ ना कुछ धंधा स्टार्ट करेंगे. आप लोग भी ऐसे करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो धंधा स्टार्ट करोगे, कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, पढ़ाना शुरू कर दोगे. इफ़ यू आर गुड एट टीचिंग, इफ़ यू आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, है ना. या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते ही रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी देयर, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है. सो दे गेट इन्वॉल्व देयर ओनली, वो उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी वहीं निकल जाती है. डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल लुक फॉर सम जॉब, सम मेथड ऑफ मेकिंग मनी, है ना. तो सैलरी नहीं मिलेगी तो कैजुअल वर्कर की तरह काम करोगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे. अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर स्टेइंग इन अर्बन एरियाज, तो आप एमजी नरेगा के लिए भी एलिजिबल नहीं हो. यू कैन नॉट गेट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन एमजी नरेगा ऑल्सो. तो ध्यान से जाइएगा इस रोड पे जहाँ भी आप जा रहे हैं. दिस इज नॉट अ सिल्क रोड. अब ये सब हमने एनालाइज कर लिया. इस एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है? देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू कंस्ट्रक्शन. देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा हाइक है एंड देयर इज द लार्जेस्ट फॉल इन एग्रीकल्चर व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू कंस्ट्रक्शन विच इज गुड एज वेल एज बैड. व्हाई इज इट बैड? इट इज बैड बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज लार्जली इनफॉर्मल इन इंडिया इन नेचर. अगर उसका नेचर हम देखें तो इट इज लार्जली इनफॉर्मल इन नेचर. दैट इज व्हाई इट इज बैड. बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर कौन सा फॉर्मल था? दैट वाज आल्सो लार्जली इनफॉर्मल इन नेचर. So the problem is they're moving from one informal category into another informal category. एक से निकल गए दूसरी में पहुंच गए वो, तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उनका, वहीं वहीं अटके हुए हैं वो. ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज नंबर वन कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर. सेकेंड कंक्लूजन जो यहाँ मेन और वेमेन से रिलेटेड है, ये तो आपको समझ आ गया होगा. सेकेंड कंक्लूजन जो मैंने थोड़ा लंबा लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन और वेमेन से रिलेटेड है. ओके. For men, an exit from agriculture meant a large increase in the share of construction, while for women, it meant an exit from the workforce. Now, what has happened here? Men have moved from agriculture to construction largely, but men have moved from agriculture to construction largely as per the report. We're sticking to the report. Some other report might say something else. Whereas women who were involved in agriculture now largely have become unemployed. They moved out of the workforce itself. Secondly, what does it say? Less educated women working in agriculture have exited the labor force. Less educated women working in agriculture. Less educated women working in agriculture have exited the labor force or workforce, and younger and more educated women are making an entry. But at the same time, an additional improvement that we are seeing here, because salaried class बढ़ रहा है, is that more educated women who are able to educate themselves post their schools into colleges and masters and whatever, they are able to move from agriculture towards salaried class. The report specifically says this. ये उसके डेटा के बेसिस पे सारे conclusions हैं. I hope this is clear. So the report says that in the last 30 years, अगर हम conclude करना चाहें, people have moved out of agriculture. We can see that very clearly. A lot of people have moved into construction sector. Yes, there is a movement. There is an increase in people involved in services as well as manufacturing. Manufacturing में देख सकते हो बहुत कम है, very minuscule. And at the same time, people have moved into salaried class. Also, self-employed casual में कम हुआ था, but after 2019 pandemic, that also has increased because of a fall in economic growth. यहाँ तक clear है? Now the report also brings out some other facts. These facts are specific to gender, caste and religion. Gender, caste और religion के basis पे अगर हम pay, salary को determine करें, what is the situation in India as per the report? The report says if we analyze
SC/ST with the unreserved category or with general class of our society. तो अगर हम दलित्स को हम नॉर्मल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों से कंपेयर करें, दिस इज वेरी वेरी सीरियस इशू. यू कैन सी हियर दैट दे आर एबल टू अर्न जस्ट 67% ऑफ व्हाट डोमिनेंट कम्युनिटीज अर्नड इन 2021-22. तो यहां से हमें पता लगता है डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू हाउ दे आर ट्रीटेड in public or in private, but it also takes the form of economic disparity. Now, this is a very good point of analysis as well as understanding, because disparity or discrimination between people of SC/ST and various other classes is not limited to their status in society. It also takes an economic form here where they are paid lesser than a person of the same caliber at the same level working in an ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन. ये प्राइवेट सेटअप्स में होता है, पब्लिक में तो अलाउड नहीं है, सो इट कैन नॉट हैपन. आई होप दिस इज क्लियर. समबडी इज आस्किंग समथिंग. कैन वी यूज 11th and 12th कॉमर्स बुक्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी? कर सकते हो, बट दे विल हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी. तो 11th and 12th की इकोनॉमिक्स की बुक उठाओ, यू विल गेट सम गुड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर. वहाँ से बेसिक्स मिलेंगे, और सारी अकाउंट्स वगैरह उठाने की जरूरत नहीं. यू विल नॉट गेट इनफ इंफॉर्मेशन और इनफ कंटेंट देयर. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. 40,000 मंथली सैलरी सिनेरियो ऑफ दिस रिपोर्ट देखते हैं. वो मैंने इज इट इम्पॉर्टेंट इनफ और नॉट, तो मैंने डाला है पीपीटी में या नहीं डाला है, बिकॉज इट्स देयर इन द डॉक्यूमेंट जो कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मिलता है वीकली, बट आई डोंट नो इफ इट्स इम्पॉर्टेंट इनफ दैट आई पुट इट हियर इन द पीपीटी और नॉट. ठीक है ना. Second analysis related to women SC/ST. Not only women, but women belonging to SC/ST category. Women in these communities earn 54% of what those in others earned. So overall, men plus women को देखें तो 67% है. So there is a discrimination. 70% के आसपास कम मिलता है, मतलब अगर दूसरे बंदे को 100 मिल रहा है तो यहाँ पर इसको 70 मिलेगा. But when it comes to women, it's even more. If a woman belonging to other categories earning 100, so a woman belonging to SC/ST category is earning only 54 rupees. So the disparity is much wider when we specifically relate with women. Women versus men अगर करेंगे तो वहां पर भी disparity है. As per the report, it says there is a disparity and 76% of pay is received by men. So whatever men receive, women receive 76% of that. So the disparity is still there. ठीक है ना. Women versus men में unfortunately it still exists. I don't know why. पढ़ाने की बात करोगे तो women are better teachers than men. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कितनी wonderful women are teaching, but I don't know why this kind of disparity exists. And they are more hard working. That goes without saying. Fourth category, self-employed women. Now self-employed women who are not working, उनको भी 40% है. द डिस्पैरिटी इज मच मोर हेयर. अगर कोई मैन है सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हर 100 रुपये कमा रहे, अगर उसकी जगह पे अ वुमेन इज सिटिंग देयर, शी इज एबल टू अर्न ओनली 40% बिकॉज ऑफ वेरियस अदर काइंड्स ऑफ डिस्पैरिटीज. एंड इफ वी कंपेयर जनरल कैटेगरी विद बैकवर्ड क्लासेस लाइक मुस्लिम्स एंड OBCs, there is a disparity. The lower classes, backward classes like Muslims and OBCs are able to earn 75% of average regular pay compared with what people from other classes are able to earn. कोई 100 रुपये कमा रहा है तो Muslims OBC 79 rupees ही कमा पा रहे हैं. That is the disparity that we see here. Now this is strictly limited to the scope of the report. Please remember that. Okay. मैंने आपको बताया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो इंप्रूव हुआ है आफ्टर कोविड बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द सैलरी क्लास बिकॉज ऑफ लेसर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो इंप्रूव हुआ है उसके नंबर्स क्या हैं? In 2019 the rate of self-employed male workers was 50%, 50, बट यहाँ पे बढ़ के हो गया 58.2%. और अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें इट वाज अगेन अराउंड 50%, ये बढ़ के 61% तक हो गया है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो आई वुड नॉट आस्क यू टू मग अप दिस डेटा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट
the number of people, the proportion of people working as self-employed people after COVID has increased. That is all that you need to remember. ठीक है ना? इंडियन जॉब मार्केट में अब क्या क्या हुआ है? देयर इज एन इंक्रीज इन सैलरीड वर्कर्स, इट हैज इंक्रीज टू 25%, इंडिकेटिंग ग्रोथ इन रेगुलर जॉब्स. ये थोड़ा सा नीचे गया है बिकॉज ऑफ कोविड, बट ऑलमोस्ट यहीं पर अभी भी है, ऑलमोस्ट यहीं पर आ गया है. Pace of job creation, the pace of regular wage job creation has fallen, coinciding with slower economic growth. Regular wage job creation, which is nothing but salaried workers, this has fallen. The pace of growth has fallen. 25 से अभी तक 30 हो जाना चाहिए था, तो वो 25 से नीचे जाके 23 पे आके अटक गया है. So the pace of growth has fallen because of COVID. Unemployment among graduates is massive. It's very high. Graduates under 25 face an unemployment of 42%, which is massive. ठीक है, you guys being one of those unemployed people out here. And what about societal norms and employment? In urban areas, societal norms affect women's employment. Now this is something that Dr. Amartya Sen mentioned about 7-8 years back in one of his books which I read. जो 40,000 की बात करें वो यहाँ पे mentioned है. What did he say? Dr. Amartya Sen said that in urban areas, we assume that women who are educated are able to find jobs and are independent enough to work as per their wish. But the real scenario is that women who belong to, good societal structure or societal strata and are also educated after their marriage, they are unable to work. Either they are willing but unable to work, or they are not willing to work because of societal norms. If the male's salary, the salary of the husband, crosses 40,000 per month. Now, why does this happen? This happens because of the social discrimination that we still see in our society. Women, it is considered and assumed that women should work only when there is a need of money. It is assumed that work is only for money for women, and therefore they need to work only if there is a need of money in the household. If there is no need of money, if the husband is able to earn enough, then why should the woman work? This is the norm, this is the social discrimination or gender-based discrimination that we still see in Indian society, and this is something that we're witnessing massively in urban areas. And Dr. Amartya Sen, through his own analysis, brought it out a long time back. He said that although women are educated, although women are willing to work, although women want to work, they are capable of working, but even then they are not allowed to work in tier 1 cities of India as well because of this gender based discrimination that we see. ठीक है ना? I hope this is clear. यहाँ तक clear है, कोई problem तो नहीं है. I hope this particular topic is over. Yes. So this was about the concept of jobless growth and its various aspects. इस वीडियो को फिर से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी. ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, फिर से देखना चाहिए और देखना पड़ेगा बिकॉज जॉबलेस ग्रोथ एज अ कॉन्सेप्ट इज इटसेल्फ वेरी मैसिव एंड ह्यूमंगस. उसको समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे. तो यहाँ से बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ आ भी जाएंगे. ठीक है, ठीक है. दूसरा उठाते हैं, ये उठाते हैं इंडिया एंड कनाडा. लेट्स पिक अप दिस वन. ओके, नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट इंडिया एंड कनाडा are in a scuffle, fighting nowadays. A lot of geopolitical tensions are rising. But what happens amidst all the clutter that we see on internet as well as on especially the news media, we forget what really matters from our examination point of view. Agar aapko, if you want to move out of that 42% unemployed people below the age of 25 who are graduates, अगर आप 25 से ऊपर भी हो तो भी अनएम्प्लॉयड हो, देन यू हैव टू कट द क्लटर. कट द क्लटर एक एपिसोड आता है ना, इट कम्स रिलीज्ड बाय मिस्टर शेखर गुप्ता आई बिलीव ऑन यूट्यूब. यू हैव टू कट द क्लटर एंड व्हेन यू नो go into something which is as sensational as India-Canada relations and the tensions between these two countries, then there are high chances that you will fall into the clutter only, because that is what you'll see all around.
कहीं भी जाओगे इंटरनेट पे न्यूज़ में आपको क्लटर ही दिखेगा, कूड़ा दिखेगा. Let's try and move away from that clutter and let's try and understand only the economic impact of the souring or deteriorating India-Canada relations. In relations की deterioration से what are the economic impacts that we are going to witness, उसको हम आज देखेंगे. ठीक है ना. न्यूज की अगर हम बात करें, इंडिया हैज सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज causing tension between two countries. There are potential economic implications that could harm both the nations. Let's try and understand. Okay. Already बहुत सारे लोगों के पास डेटा है. I'm very happy that you guys are studying newspapers like Live Mint and Business Standard regularly, क्योंकि ये डेटा मैं भी वहीं से उठाऊंगा थोड़ा बहुत और रिसर्च करके. PIB में भी आया था ये डेटा, Live Mint में भी था, Business Standard में भी था. So I'm very, very happy. Akash is able to pick out this data and he remembers this data and he's able to post it out here. Wonderful. ठीक है, start करते हैं एक एक करके. I cannot zoom it in further, but I think you guys can see it. I hope you guys can see it. नहीं भी दिख पाएंगे तो it's fine. I'll be able to bring it out to you. ठीक है ना. अलग अलग aspects. We'll try and pick it up based upon different aspects. मृणाल सर इनको पिलर्स बोलते हैं, हम लोग भी पिलर्स बोल सकते हैं. There is nothing wrong in that. I think this is something that makes it easy for us to remember. Okay, when we are trying to understand something and remember it. तो ये पिलर्स हो गए. जब भी आप किसी भी रिलेशन के बारे में बात करते हो between two countries, then these are the pillars that you can base your argument on. Okay, तो एक पिलर्स क्या होंगे? सबसे पहले हो सकता है आइडियोलॉजिकल पिलर. The second can be trade pillar. Third can be foreign direct investment or any kind of investment pillar. Fourth can be diaspora, which is specific to India. Indians are everywhere. That is another pillar. Students की बात करें, वो भी diaspora में ही आ गया. Then we have the tourism pillar. And finally, we have the legal pillar or the laws pillar. Laws हो गए, policies भी बोल सकते हैं इनको. So, policy pillar or the laws pillar. तो ये हमारे अलग अलग pillars हो गए through which we can try and break down any topic and try and understand relations between two countries better. ठीक है. अगर हम इंडिया कनाडा के रिलेशंस देखें तो हम आइडियोलॉजिकल पिलर पे अगर हम आए, इफ यू कम टू आइडियोलॉजिकल पिलर, both the nations are democratic in nature. Both the nations have had a long history of bilateral relationship. In 1947 itself, immediately after India's independence, we created bilateral relationship with Canada. Okay. The principles based upon which the nations work are also similar. Democracy, human rights, rule of law, pluralism. कहने के लिए ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बस इनका कुछ ज़्यादा मीनिंग हमें लगता नहीं है, because you want to just mug it up and clear the examination. But these are very, very important principles which determine the intensity or the nature of relationship between two countries. हमारा और चाइना का वैसा रिलेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, दे आर अ लिमिटेड डेमोक्रेसी. वी फॉलो ह्यूमन राइट्स, दे डोंट. वी फॉलो रूल ऑफ लॉ, दे डोंट. वी हैव अ फिलोसफी or principle of pluralism, we follow that no matter what kind of religion, caste or creed a person belongs to. We try and include everybody in the idea and the process of growth and development. The same happens in Canada. You can see it very well yourself as well. सरदार जी कितने सारे लोग वहाँ रहते हैं. Even then, it's very fortunate for us to see that Canadians have not rebelled against the movement of Indian Sikhs from India to Canada in such large numbers. Okay, so these are ideological similarities which have determined the relationship between India and Canada for the past 70 years, and that is why our relationship has been so strong. ये हो गया थोड़ा philosophical point of view. Let's come to the economic points now. If we talk about trade, 8 billion in 2022-23, which is not a lot compared to India's trade with various other countries. But even then, because Canada is in another part of the world altogether near the Pacific and India is here, so carrying out trade in such large numbers automatically becomes more expensive. But even then, it is significant for both the nations. FDI, foreign direct investment की अगर हम बात करें, Canadians invest heavily in India.
Canadian firms like to work in India because just like for the USA, it's cheaper to work through India, especially in the service industry. The same applies to Canadian firms as well. Over 600 Canadian firms work in India, and an investment of $3.6 billion yearly is seen from Canada. Canadian funds, when we're talking about funds, that means a combination of FDI and FPI, both of them. Canadian funds have invested over 1 trillion rupees in the last few years in Indian companies. ये कुछ numbers हैं जो आपको याद रखने चाहिए. These numbers are going to be helpful in descriptive part as well, and they can also be asked in the objective part of your examination. ठीक है ना? I hope this is clear. Somebody is asking, are these classes helpful for fresh candidates or only for interview candidates? ये fresh candidates के लिए ही हैं, not for interview candidates. Interview candidates can also watch and improve themselves through these classes. But ये जो RBI 247 चल रहा है, this is for next year's RBI 2024 examination. उन्हीं के लिए है ये. और ये जो PDF है PPT की, I will be putting that in my Telegram channel. Telegram channel का link इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेशन के बाद वो मैं अपनी टीम को दे देता हूं और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं. ठीक है. लार्ज इंडियन डायस्पोरा, 2 million Indian immigrants in Canada, and Indian immigrants in Canada form about 5% of its population. Now, I was also surprised. Now, if this question comes in the examination, you will be confused and you might end up answering it incorrectly. मैंने बहुत सर्च किया. I searched it on Canadian Embassy's website also, Indian Embassy website also, but this was the best data that I could find. I also felt that it should be more than 5%. Canada की population कितनी है? About 4 crore, 3.8 something, and out of this about 20 lakh Indians live there, which is about 5% of the population. देखने में लगता है कि यार 5% तो कुछ भी नहीं है, but 20 lakh is a big number actually. वो बड़ा number है. Okay. Indian students in Canada, 2,26,000 only in 2022, which is a big number. Tourism की अगर हम बात करें, about, you don't have to remember the exact facts. You can remember somewhere around 2.5 lakh Canadian tourists came to India as a tourist in order to see the country in 2022. This means we have strong people-to-people contacts as well. A lot of people move from India to Canada. A lot of people come from Canada to India for tourism. So this tells us that people-to-people contacts between the two countries have been very strong, और ये impact भी पड़ने वाला है. This is going to have an economic side also. If people from Canada don't come to India, our tourism industry will suffer. If people from India, students as well as immigrants, are not able to go to Canada, then these people will add to unemployment numbers in India and will be a burden on Indian economy as well. Okay, there has been a proposed free trade agreement or free trade pact that has not been signed yet. So अब तो ये अटक जाएगा. This is going to take a long time. About double taxation avoidance agreement. Can anyone tell me what is double tax avoidance agreement, DTAA? कोई अगर ये बता सकता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. Double tax avoidance agreement. If anyone can tell me what is double tax avoidance agreement. अगर हम देखें यहाँ पे, so India and Canada have already signed a double tax avoidance agreement which ensures that taxation revenues for both countries do not go into each other's territory. It also brings ease of doing business for companies involved in cross-border business. Tax in both countries on companies working in two countries. Yes. No, double tax avoidance agreement is not tax on tax. It's basically, let's say I have a company in India and I want to teach Canadian students. Okay. तो मैंने कनाडा में एक सब्सिडियरी सेटअप करी. आई सेटअप अ सब्सिडियरी इन कनाडा एंड आई स्टार्ट टीचिंग देम, एंड फॉर दिस आई एम टैक्स्ड इन कनाडा, और मेरे को यहाँ पे टैक्स देना पड़ा बिकॉज माई प्रिंसिपल बिजनेस इज इन कनाडा टीचिंग कैनेडियन स्टूडेंट्स थ्रू दिस सब्सिडियरी.
नाउ लेट्स से आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ $100, $100 का मैंने प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स. आई शुड नॉट बी टैक्स्ड अगेन ऑन दिस इन इंडिया. इंडिया में फिर से टैक्स नहीं होना चाहिए. नाउ इफ दीज टू कंट्रीज इंडिया एंड कनाडा हैव अ डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, देन आई विल नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन दिस प्रॉफिट अगेन. तो यस, टैक्स ऑन टैक्स तो होगा ही कहीं ना कहीं, because I've already paid tax on something and I'm paying, if I don't have a DTAA, then I have to pay tax on that same profit yet again. So that will be tax on tax. But the primary purpose is to ensure that I'm not paying the same tax twice. It's not that I'm not paying tax on tax, but to ensure that I'm not paying the same tax on the same profit, I'm not paying tax twice for two countries. Okay. So that is double tax avoidance agreement. ये clear है? So this is about, ये सिंगल स्लाइड में आपको सारा क्लियर हो जाएगा अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स. कल को इंटरव्यू में जाते हो, किसी से बात कर रहे हो, शादी में खड़े हो, लोगों के सामने अपना थोड़ा सा रौला दिखाना है, यू वांट टू शो ऑफ अ लिटिल बिट, you can mug up these facts and try and make sure that you come out as an intellectual amongst the crowd. Okay, these are all the pillars based upon which you can analyze the economic impacts of the souring India-Canada relations. I hope this is clear. यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा इंडिया-कैनेडा स्कफल. ठीक है, लेट्स पिक अप अनदर वन. एक और उठा लेते हैं. यस, दिस वाज इंटरेस्टिंग. आईबीसी में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं and they will happen very very soon. Now what are these changes? Okay, यहाँ पे आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है because these are for insurance companies. The insurance companies are saying that when we are acting as sureties, one second, when we are acting as sureties by issuing surety bonds. I will tell you what are surety bonds very shortly. So insurance companies are saying when we are issuing surety bonds and acting as sureties on somebody's behalf, and if that person defaults, अगर उसने default कर दिया, then we have to recover that default money. We have to try and recover that default money from that defaulter. We cannot just let him go. In that case, we should have the powers that banks have under insolvency and bankruptcy code, which makes sense. I think it makes complete sense that they should have the power to act as bankers when they are issuing defaulters, when they are facing defaulters. उन्होंने surety bond issue किया. On that issue, the person defaulted. Now they want to recover that money. They should be able to act as banks, or they should have the powers that banks have when it comes to recovering the money from defaulters. Okay. So the insurance companies are saying that they must have pitched it to the regulator IRDAI, and now the government is planning, they've not done it yet, the government is planning to make amendments to the insolvency and bankruptcy code to include insurance companies as financial creditors. These are the keywords. Please remember them. यहीं से marks मिलते हैं. In the interview as well as in phase 2, this is what will get you marks. To act, insurance companies to act as financial creditors in case of defaults. What are these defaults connected with? Surety bonds. Surety bonds issue करते हैं. वहां पे अगर there is a default, then these insurance companies should have the power to act or to be considered similar to financial creditors. समझ आ गया यहाँ तक? Let's try and go back a little and understand what are surety bonds. Surety bonds exactly होते क्या हैं वो समझ लेते हैं. Then we'll come to the news again. Okay. Definition अगर हम देखें, these are financial guarantees provided by insurance companies in majorly infrastructure projects because they have long gestation periods and they require a lot of funds to ensure that businesses fulfill their commitments. अब exactly हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूं, फिर ये एक बार पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना. This here is an insurance company. ये इंश्योरेंस कंपनी है. We have a principal here.
and we have an obligee here. So there are three parties, तीन parties हैं हमारे पास. We have the principal, we have our obligee, and we have the insurance company. तीन लोग involved. The principal is the person or is the party that wants surety, that wants to do something for which it wants the help of insurance company. Let's say the obligee, which is normally a government company, if there is an infrastructure contract, इसने बोला प्रिंसिपल को या फर्स्ट पार्टी को कि यार आप एक ब्रिज बना के दो अपने को. इसने बोला है हमको ब्रिज बना के दो. द प्रिंसिपल सेज श्योर, व्हाई नॉट, लेट मी डू इट. उसने कुछ लोन उठाया मार्केट से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. एंड नाउ दैट प्रिंसिपल comes to the insurance company and says that please give me a guarantee in the form of a surety bond so that I can fulfill my obligation of building this bridge. The insurance company says, okay, why not? I'll do it. I'll issue a surety bond in your name, which means that if you default, then I will fulfill the financial obligation. But I would take some premium. Let's say the contract is for $100 million. Dollars में अगर हम consider करें, I would take a premium of let's say $10,000. मैं इतना premium आपसे लूँगा for carrying out, for issuing a surety bond, saying that if you default, then I will pay to the obligee, the third party. Okay. Now the principal defaults. This person runs away. ये भाग गया. So the insurance company now has to fulfill the obligation by paying some kind of penalty or whatever, which amounts to somewhere around, let's say $100 million or $50 million, whatever it might be. So the insurance company says that I should have the power to be considered a financial creditor, to be treated like a financial creditor, which is the same as a bank in case of a default when I go to insolvency and bankruptcy court and try to recover my money from this principal. Principal is a defaulter doesn't mean that he's vanished. Not everybody is Vijay Mallya. So vanished to nahi hua, he still exists. So now the insurance company wants to recover this money. Okay. In order to do that, it wants enhancement of powers in front of insolvency and bankruptcy court. Clear है यहाँ तक? कोई problem तो नहीं है? कोई problem हो तो बता दीजिए. If you like these sessions, then please share them with your friends. Whoever is preparing or not preparing, if they're interested in learning something new, किसी का भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, सबका भला होगा. Knowledge should be shared. Only then it makes sense. Otherwise, knowledge तो सबके दिमाग में होती है कुछ ना कुछ. Till the time you don't share it, it doesn't become useful. ठीक है ना? अगर सब अपने पास रखते तो किताबें ही नहीं होती. आगे आते हैं. Parties involved. The three parties involved. I told you there is an insurance company, there is a principal who makes a commitment, and there is an obligee to whom the guarantee is given. What is the purpose? The surety bond protects the obligee in case the principal is unable to fulfill their duty, providing financial security. यही मैंने अभी आपको explain किया है. Exactly the same. Clear है यहाँ तक? आगे आते हैं. Benefits of surety bonds. Now you might ask, why is this principal going to the insurance company and not to the bank for this surety? They can also go to the bank, borrow this money and get surety on this as well. They're not going to the bank because it's more expensive than going to the insurance company. Insurance company takes a premium and issues a surety bond providing surety without a collateral. Up, the insurance company is not saying that you give us collateral worth $50 million. The insurance company is not doing that. But the bank might do that. The banks require collateral whenever there is a heavy transaction. On the other hand, insurance company, because the business is different, we are providing surety which is similar to insurance only for premium or in return of premium. Therefore, the collateral is not required या फिर बहुत कम required होता है. Automatically, they become more attractive. Okay. Financial guarantee, surety bond insurance ensures that the obligee will be compensated in the case of default. Surety bonds are legally enforceable, which means they're also acceptable by the obligee. जो obligee है उसको वो भी accept करेगा, बोलेगा ठीक है, if this person defaults, then I can catch hold of the insurance company. Legally, the insurance company is also liable to pay me whatever the defaulter had the liability to pay. Okay. Changes and rationale.
ट्रीटिंग इंश्योरेंस एज बैंक्स, ये मैंने आपको बता दिया था. द गवर्नमेंट एम्स टू अमेंड द आईबीसी टू ट्रीट इंश्योरर्स एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. रिकवरी फॉर इंश्योरर्स, insurance companies selling wants the rule to be changed in the Indian Contract Act as well as IBC to enable them to recover funds. ये चाहते हैं खाली IBC में चेंज नहीं हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चेंज हो, बिकॉज दिस इज लाइक एन अग्रीमेंट. Okay, it's a contract between three parties, so there should be a change in Indian Contract Act as well, so that they're given the powers similar to banks in the case of recovery. Okay, IRDAI की guidelines क्या है? Insurers can underwrite. Now this is very important because this is factual. ऐसे facts exam में पूछे जाते हैं, so you should try and remember them. IRDAI क्या बोलता है? इंश्योरर्स कैन अंडरराइट. अंडरराइट का मतलब क्या होता है कि वो कितना श्योरिटी बॉन्ड इशू कर सकते हैं. इंश्योरर्स कैन अंडरराइट श्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम. जितना भी, लेट्स से आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी एंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर आई एम इशूइंग अ टोटल ऑफ, आई एम रिसीविंग total gross return premium. Insurance company receives the premium. I'm receiving a premium of let's say $10 million. ठीक है ना, ये मेरा receipts हैं in the form of gross return premium. Then I can issue surety of a maximum of 10% of this. Yes, less than equal to 10% of $10 million can be issued by me, which is the insurance company, as sureties. Okay, up to a maximum of 500 crore in a financial year. अब इसकी लिमिट भी है, it has to be less than equal to 500 crore. ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप इशू, चाहे आपका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम कितना भी हो. मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम सब्जेक्ट टू a maximum of 500 crore. It cannot be more than 500 crore. It can be less. It can be less than 10% of gross return premium. It cannot be more than 10%. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? Are surety bond securities traded in the market? They must be. I'm not very certain about it. Never searched like that, but they must be. ठीक है? I hope this is clear. तो ये हमारा हो गया आज का सेशन. We've discussed 3 important news items related to RBI 247, जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे I try and discuss those things with you. Please provide me a feedback on this as well. You can send me the feedback on this email ID. मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर. info@anujjindal.in. ठीक है, यहाँ पे आप लोग फीडबैक डाल सकते हो. इफ यू वांट टू मेल एनीथिंग, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव, इफ यू वांट मी टू डू समथिंग एल्स, कुछ भी आप जो चाहते हो वो सब आप यहाँ पे लिख के दे सकते हो. इट इज बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज टिल द टाइम आई डोंट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम यू इन रिटन और वर्बल फॉर्मेट, तो मुझे भी नहीं पता लगता है एग्जैक्टली व्हाट डायरेक्शन शुड आई बी गोइंग इनटू. स्टूडेंट को क्या चाहिए, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, वो पता नहीं लगता है. If you're coming here for the first time, you can very well go to my website www.anujjindal.in. It's not .com, it's .in because we live in India. ठीक है? If you like the session, you can go to the Telegram channel. थोड़ी ही देर में या कल तक वहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी. You can very well download and keep the PDF for your later use. ठीक है ना? कोई डाउट है पूछ सकते हो. Otherwise, we can close off the session. I'll see you next time. That will be Thursday evening. ठीक है? Divya, yes, why not? Divya, you must have my enrolled students number. You can very well call on that in the evening. The insurance company issues the surety bond. When it is doing that, it is basically underwriting in this case. ठीक है? यस चेतन सर, उनकी आज क्लास है तो वो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे. For RBI 2024, RBI 247 is more than enough.
Right now I'm picking up RBI newspapers. I will soon start picking up RBI website also. ठीक है, आई एम बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आउट हेयर. बहुत जल्दी ही आई विल ऑल्सो स्टार्ट विद द आरबीआई वेबसाइट, जो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है, बट एट द सेम टाइम इट विल बी मोर फन एज वेल टू रीड. जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड रीडिंग आरबीआई वेबसाइट मच मोर फन. चलिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. इफ यू लाइक दिस सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं वेरी मच. यू कैन शेयर इट विद देम सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न समथिंग न्यू एंड आई कैन हैव मोर स्टूडेंट्स आउट हेयर. जितने ज़्यादा होते हैं उतना मुझे भी ज़्यादा मज़ा आता है. इट्स मोर फन. ओके, चलिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन थर्सडे. टिल देन कीप स्टडिंग. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद.